Assalamualaikum dear students, welcome back to next lesson of Iqra Phonic Reader 1. We are going to start our next lesson from this book. Remember कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था first sound of walls. फिर हमने पढ़ा था कि what are walls? Walls are the sounds which produced with open mouth. और फिर हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स विच प्रोड्यूस्ड विद क्लोज माउथ्स. और ये जो आप लोगों को कलर्स में लेटर नज़र आ रही हैं, ये सारे लेटर्स हैं वॉल लेटर्स, और इनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो वॉल साउंड्स कहलाती हैं. और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट लेटर्स, और इनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं. और आज हमारे टॉपिक का नाम है वंस अगेन फर्स्ट साउंड ऑफ वॉल्स. और फर्स्ट साउंड ऑफ वॉल्स में हम लोग ये हमारे पास वॉल्स हैं, इनकी फ़र्स्ट साउंड पढ़ेंगे. कल हमने ए की फ़र्स्ट साउंड पढ़ी थी और फिर हमने उसकी रीडिंग करने के बाद उसका होमवर्क भी किया. आज हम नेक्स्ट लेटर की साउंड पढ़ने जा रहे हैं. एंड नेक्स्ट साउंड इज़ ई. Alphabet is E and it has two sound. Remember क्या थी इसकी two sounds? ए ई. yes. और इसकी फर्स्ट साउंड आज हम पढ़ेंगे इकरा फोनिक रीडर 1 से, एंड फर्स्ट साउंड इज ए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Okay, we will open our book at page number 4 and we are going to start reading. जैसे कल रीडिंग की थी उसी तरह करेंगे. पहले इसको अनग्लू करेंगे, फिर ग्लू करेंगे, एंड देन वी विल रीड. ओके, यू विल रिपीट आफ्टर मी. बेड, एग, लेग. इट्स योर टर्न. वेरी नाइस. 10. It's your turn. At net. Okay, one more time. At net. Okay, now look at the next one. Pen. Okay, now look at the next one. Jet. Okay, now look at the next one. Hen. Your turn. Yes, now look at the next one. Den. Den क्या होता है? A place where lion live. ऐसी जगह जहाँ लाइन रहता है उसे den कहते हैं. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. रेड. ओके, लेट्स रीड द लास्ट वन. पैग. एंड पैग जो हम लोग चुटकी यूज़ करते हैं कपड़े हैंग करने के लिए, जब कपड़े ड्राई करने के लिए हैंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैग. ओके, नाउ लेट्स रीड picture sentence. Okay, let's read picture sentence. 10 men fed the red hen. It's your turn. Okay, let's read it one more time. 10 men fed the red hen. Yes. And what's the meaning of fed? Khilana. Yes. So this is our today's lesson. You have to learn all the spellings and revise it time and again. बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. We'll meet inshallah next time. Allah Hafiz.